Hello friends, as you know, commerce has a wide concept and all the business activities under the head of commerce is divided mainly in two parts. Out of that, first is a business services one, in that there are so many services are covered. In that, one is most important service, that is insurance. Okay, let's see what is the insurance, what is the meaning of the insurance, and on what basis or what concept the insurance is working. So first of all, let's see the meaning of the insurance here. Insurance refers to the written contract between two parties in which insuree pays a premium against the getting and undertaken to compensate financial loss. That means what? Insurance is a contract between the two parties. One is insuree and second is insurer. Insuree who is the taking the insurance and insurer who is the providing the insurance. Okay, so insuree is paying a fixed premium against getting undertaken to compensate financial loss. That means what? That insuree is paying a yearly premium to insurer for compensate the financial. Insurance is working mainly on the four concept. There are four main concepts in that. First one is the principle of utmost good faith. The second one is principle of indemnity. The third one is the principle of insurable interest, and the fourth one is principle of subrogation. Let's see the first one, the principle of utmost good faith. The principle of utmost good faith in that whatever the contract is there, in that both the party, insuree and insurer, should work on the faith, utmost good faith. That means insuree and insurer should disclose all the information related to that contract or that particular contract which is done by in between the insuree and insurer. Even though in contract it is not disclosed or not asked, even though both the parties should clear about all the information about the regarding the contract of the insurance. Okay, so this was the insurance of the utmost good faith. But later on, if any information related to that contract is disclosed, then that contract will be null or void. Null or void, that means that contract will be illegalized, that contract will not be valid. Okay, so this is the principle of utmost good faith. Now, second principle of insurance is principle of indemnity. Principle of indemnity is to compensate the loss incurred by the insuree, and the insurance company will decide to how much pay to the insuree. Okay, that means the main objective of the insurance company to compensate financial loss, but not to the earn profit from that insurer, from the insurance. So the second principle of indemnity is, the objective of that principle of indemnity is to compensate the financial loss, not to earn profit to the insuree or insuree. Okay, so this is the second concept of the principle of indemnity, that can be explained with the three examples. Like, if you have a shop and your shop have a 5 lakh rupees of goods, and you have taken an insurance of 3 lakh, and in that case insurance company is liable to pay you 3 lakh and less than 3 lakh. Means अगर आपकी एक शॉप है और उसके अंदर 5 लाख रुपीस का गुड्स है, और 5 लाख के गुड्स में से अगर आपने 3 लाख रुपीस के गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख या 3 लाख से कम पैसे के लिए आपको इंश्योरेंस देने के लिए लायबल है. इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदारी आपको 3 लाख या 3 लाख से कम रुपीस देने की है, ना कि 5 लाख रुपीस. First case. And now the second case, if you have a shop and a goods of 5 lakh has been goods of rupees 5 lakh is inside, and you have taken a insurance of 3 lakh, but the goods has been partially damaged, then company is liable. That partial amount means whichever the goods has been damaged, insurance company is liable to pay only that much amount or less than that much amount. Means इन द सेकेंड केस, अगर आपकी एक शॉप है और उसमें अगर 5 लाख रुपीस का गुड्स है, उसमें से अगर आपने 3 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और उस 3 लाख में से भी अगर आपका पार्शियल डैमेज हुआ है, ओके, और पार्शियल डैमेज का मतलब आधा या हाफ से कम
गुड्स डैमेज हुआ है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जितना गुड्स आपका डैमेज हुआ है उसी गुड्स के सामने कंपनसेट करने के लिए लायबल है, उसी लॉस के सामने वो आपको पैसा दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी। सो सेकंड केस, हाउ मच योर लॉस इज अकर्ड, insurance company will only compensate that much. Now third case, if you have a shop and your inside of your shop is a 5 lakh rupees of goods and you have taken insurance of 5 lakh and fully 5 lakh rupees of goods has been damaged, in that case your company is liable to pay you fully 5 lakh rupees. Means थर्ड केस में अगर आपका शॉप है और उसमें अगर आपका 5 लाख रुपीस का गुड्स पड़ा हुआ है और उसमें से अगर आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 5 लाख रुपीस आपको देने के लिए लायबल है, पूरा 5 लाख रुपीस देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदारी होती है। दिस वॉज द 3 केसेस, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वेरी वेल। Okay, now the third concept, that is principle of insurable interest. In this case, principle of insurable interest, that means insuree who or whoever is taking the insurance, his interest should be inside the insurance contract. ओके, और इंश्योरेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है वो जिस चीज के लिए इंश्योरेंस ले रही है उस चीज में उस पार्टी का इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस हैज बीन रेंटेड टू समवन बट द ओनर हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन दैट हाउस बट रेंटी डज नॉट। मीन्स अगर आपका एक घर है और अगर आप उसका इंश्योरेंस करवाते हो तो उस घर को मेंटेन करने में ओनर मीन्स मालिक का इंटरेस्ट है, रहता है, बट अगर कोई रेंटी है, अगर कोई किराएदार है तो उसको उस मकान को मेंटेन करने में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना कि मालिक का होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जो पर्सन जिस चीज के लिए इंश्योरेंस ले रहा है उस चीज में उसका इंटरेस्ट अंदर होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 3 और प्रिंसिपल ऑफ नंबर 3, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Now, fourth is the principle of subrogation. Principle of subrogation is the most important principle after event occurred, और जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है उसका गुड्स जितना डैमेज हुआ है वो डैमेज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का राइट्स आ जाता है। ओके, दैट मीन्स अगर आपने 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस लिया हुआ है और पूरा 5 लाख रुपीज का गुड्स जल गया है और डिस्ट्रॉय हो गया है, सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू 5 लाख रुपीज, बट वॉट एवर डैमेज गुड्स इज देयर ऑन दैट द राइट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी विल बी देयर। उस डैमेज गुड्स के ऊपर राइट इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा, ना कि इंश्योरी जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसका, क्योंकि उसको कंपनी पे कर रही है और उसके सामने जो भी डैमेज गुड्स है उसका राइट इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। बट दिस इज नॉट इम्प्लीमेंट और एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बट ये कॉन्सेप्ट और ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में वैलिड नहीं कंसिडर होता, या लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो कंसिडर नहीं होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इंश्योरेंस and 4 main principle of insurance. Again I am repeating, these are the 4 main principle. First one is principle of utmost good faith, जिसमें दोनों ही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। अगर बाद में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बाद में डिस्क्लोज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे हैं कि आपने जितने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है उतने ही गुड्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल है, ना कि आपने जितना गुड्स आपकी शॉप में या आपकी दुकान में पड़ा हुआ है उसके लिए। जितने गुड्स का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उतने ही गुड्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने की जवाबदारी में आएगी। नंबर 3 इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो पर्सन और जो इंश्योरेंस ले रहा है वो जिस चीज या जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहा है उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोसेस द डैमेज गुड्स के ऊपर जो राइट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। दिस वाज द 4 मेन प्रिंसिपल ऑन दैट द इंश्योरेंस कंपनी इज वर्किंग। Students, hope you will be understood what is the insurance and on which concept the principle of insurance is working. So
If you have any problem, let me know about that and give me your suggestions about if you want to know something more about in the insurance, then I will let you give some more information about the insurance in our further videos. Till then, have a good day.